Hello and welcome. This is a lecture number 2 of Laplace Transform. In the last lecture, we have seen which function is Laplace transformable function. And in that lecture, we have seen two conditions: that the function must be a piecewise continuous function in the interval 0 to infinity. And second is the function must be of exponential order of some alpha, right? But these two conditions are only sufficient conditions. Then might be you are thinking, what is the meaning of sufficient conditions? Its meaning is that these conditions are not necessary. Again, you are thinking, what is the meaning of that when the conditions are not necessary? Okay, let me explain. The previous two conditions on the function are sufficient. It means that, suppose you are considering one function, some function f of t, and you are checking whether it is piecewise continuous or not. You are checking whether it is exponential order function or not. So both the conditions are satisfied by that function. It means that जब दोनों conditions fulfill हो गए, function ने कर दिए कि वो piecewise continuous भी है और exponential order भी है, तो you can say that the Laplace transform of that function must be exist. That is the meaning of sufficient condition, and it is not necessary. Its meaning is that if you take a function and if you check whether the function is piecewise continuous or not, or any one condition from these two conditions will not satisfy, मतलब दो कंडीशन जो हमने दिए थे उसमें से कोई भी एक कंडीशन satisfy नहीं होती है, then what will be your conclusion? Can you say that कि एक कंडीशन satisfy नहीं हो रही है, दोनों नहीं हो रहे, इसका मतलब ये इसका Laplace ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट नहीं होगा? ऐसा आप नहीं बोल सकते. कभी कभी ऐसे भी फंक्शंस होते हैं जिनकी ये दो कंडीशन में से एक कंडीशन सेटिस्फाई होती नहीं है, फिर भी उनका Laplace ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट होता है. That's why I'm saying that piecewise continuity and exponential order conditions are not necessary. These are only sufficient. Right? समझ में नहीं आ रहा है तो चलिए मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ. Suppose that f of t, I'm considering the function, okay, f of t is equal to 1 upon root t. And now I want to check that what will be its Laplace transform. So I can write this function as 1 upon t raised to 1 by 2 because square root of anything is having power 1 by 2. And using the rule of exponent, ये जो denominator है ये जब ऊपर जाएगा तो उसके exponent का sign change हो जाएगा. So actual this function is t raised to minus 1 by 2. And we know that the rule of this, what is that rule? In the previous lecture, we have seen Laplace transform of t raised to n is equal to, it is the gamma function of n plus 1, or you can write n factorial when n is positive integer. लेकिन वो integer नहीं रहेगा तो you can use this notation, and divided by s raised to n plus 1. All right. Now here in this case Laplace transform of t raised to minus 1 by 2 is equal to gamma function of minus 1 by 2 plus 1 divided by s raised to minus 1 by 2 plus 1. And we know that minus 1 by 2 plus 1 is again 1 by 2, so it is gamma function of 1 by 2 divided by s raised to, its addition is again 1 by 2. So s raised to 1 by 2. So yes, and this is true for all real part of s greater than 0 because s is in the denominator. तो आंसर तो आ गया.
इसका मतलब 1/√t का लैप्लस ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट होता है, सामने है। अब हम वो दो कंडीशन इसमें फुलफिल होते क्या देखते हैं। नाउ द फर्स्ट कंडीशन इज कि ये पीस वाइज कंटिन्यूस होना चाहिए इन द इंटरवल 0 to infinity. What happen when you take the limit as t tends to 0, क्योंकि इंटरवल 0 to infinity है तो आपको इसका लिमिट at x t tends to 0 लेना ही पड़ेगा। And when you take the limit as t tends to 0 of this 1/√t, what happen? It will become 1/0 and this is infinity, and you can say that limit does not exist. Limit does not exist. Okay. इसका मतलब ये हो गया कि आप जो फर्स्ट इंटरवल लेंगे जिसमें 0 होगा, उस इंटरवल में तो ये जंप कंटिन्यूटी दिखाई नहीं रहा है। एट t इक्वल टू 0 इट इज नॉट कंटिन्यूअस, लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं हो रहा है, तो कंटिन्यूटी तो बहुत दूर की बात है। देखिए, आपके दो कंडीशन में से पीस वाइज कंटिन्यूटी की कंडीशन ये फुलफिल नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी इसका लैप्लस ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट है। इसलिए मैंने कहा था कि द कंडीशंस, दो कंडीशन जो थे वो सफिशिएंट है। इसका मतलब अगर दो कंडीशन कोई फंक्शन सेटिस्फाई करता है तो हम गारंटी दे सकते हैं कि उसका लैप्लस ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट होगा। लेकिन दो कंडीशन में से कोई एक कंडीशन वो सेटिस्फाई नहीं करता है तो हम यही बोल सकते कि एक कंडीशन नहीं कर रहा है तो इसका लैप्लस ट्रांसफॉर्म गारंटी के साथ एग्जिस्ट होगा, ऐसा तो नहीं बोल सकता मैं। एग्जिस्ट हो भी सकता है, एग्जिस्ट नहीं भी हो सकता है। बिल्कुल रिजेक्ट नहीं कर सकते उसके एग्जिस्टेंस के बारे में। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ सफिशिएंट कंडीशन एंड नेसेसरी कंडीशन। ओके, तो ये एक एग्जांपल हमने दिया, काउंटर एग्जांपल, जिससे ये प्रूव होता है कि वो दो कंडीशंस sufficient थे for the existence of Laplace transform of any function, right? Okay, now the interesting thing is if I'll take function like this, f of t is equal to, this is the very famous function, sine of 80. Now this is a trigonometric function. It is a basic trigonometric function and I wish to find its Laplace transform. So I am not wasting my time to prove that whether this condition, this function will satisfy two conditions, piecewise continuous and exponential order. I will find directly Laplace transform of sine 80. Okay, how to find? So if f of t is equal to sine 80, then the question will be like this, then find Laplace transform of this function. Okay, so what is the definition of Laplace transform? We know that Laplace transform of this function sine of 80, I'm putting inside the bracket, this is the operator, and we know that how Laplace transform operator will work. So first of all, we will write integration from 0 to infinity. Then because of that, this is a Laplace operator, therefore I am considering its kernel e to the power minus st into this function, and this is sine of 80, and integration obviously with respect to t. Now this is again a product of two different functions. One is exponential function and another is a trigonometric function. And we know that in the theory of integration, when we are having product of two different category functions, then we are using integration by part, right? So I can use here integration by part, but I remember, or I'm remembering one of the short method to find such integration involving exponential function and sine or cos. So what is that shortcut? The shortcut is the parameter in the exponential function other than t
I can treat that parameter as a first constant. Okay, so here in this exponential function, the parameter or constant, I can say, apart from t is minus s. So I'm considering this minus s is my first constant. Okay, now look at this trigonometric function, and in this function one more constant is present, and that is a. So I'm considering this a as a second constant. So first constant and second constant I have nomenclature because I want to teach you how the short method of such an integration will work. So you can write directly its answer. The answer is, you write exponential function as it is divided by square of first constant, and your first constant is minus s, plus square of second constant, and your second constant is a. Now you give such a parenthesis, and then you write first constant. Okay, this is minus s. Then you write this function, whatever, sine or cos, whatever, as it is sine of 80. Okay, now you just leave the space. यहाँ आपको एक जगह छोड़नी है जहां पर आप बाद में प्लस या माइनस लिखोगे. ओके, सो उसके बाद हम लिखेंगे, यू जस्ट राइट सेकंड कांस्टेंट दैट इज a, and now multiply to this second constant by integration of this trigonometric function, not actual integration. You are observing it is a sine. What is the integration of sine? Tell me. So integration of sine is, I think, minus cos, right? Minus cos. So you are getting integration of this sine is minus cos. Therefore, I am putting minus here, cos here, and you just put whatever the quantity inside the sine, you keep as it is inside the cos. So it is 80. So it is not an actual integration. This is somewhat about to know which sign should be here. So that's why you take the integration of only sine. That integration is minus cos, therefore put minus here, cos here, and whatever the variable inside the sine you put as it is. Okay, now complete this bracket. This is the integration of this product in one step. That's why I'm calling this is a short method to get the integration of such a product. Now I got the integration, therefore I'm putting the limits. The lower limit is 0 and the upper limit is infinity. Okay. Now I will simplify as much as possible. So here e to the power minus st, keeping as it is. The square of minus s is s square. The square of a is a square. Keep as it is. Okay. Now this parenthesis, ये जो है ये प्रोडक्ट वैसे ही लिखते हैं, माइनस एस इंटू साइन ऑफ 80. ओके, एंड दिस इज माइनस ए कॉस ऑफ 80. Okay, all right. Now giving the limit 0 to infinity. Okay. Now what we should do? तो अब यहां पर आपको अपर लिमिट लेना होगा द होल आंसर का, माइनस लोअर लिमिट लेना होगा. लोअर लिमिट आपका 0 है. But I am thinking the upper limit is infinity and that is the limit of t. Therefore, when I will put t equal to infinity here, then what happened? Now here the role of s is very important because s is a parameter. It may take any value, maybe real number, maybe complex number, whatever. But what happened when s is itself negative? Just imagine s is itself negative
what will happen? The value of s, which is itself negative, multiply by this minus, therefore the value of minus s will become positive. And when this is a positive, and when you put infinity at t here in place of t, then your exponential will become e to the power infinity. And you know that e to the power infinity is again infinity. So you are getting the answer as infinity there. That means that your integration does not exist. And the integration is nothing but our Laplace transform. Therefore, in that case, Laplace transform does not exist. So, what we should do, we have right to give the range or any restriction on s, and that is s must be positive. S must be greater than 0. S must be greater than 0. So if s is a complex number, then I'm writing for real part of s greater than 0. That is very important. ये कंडीशन नहीं लिखोगे तो ये एक्सपोनेंशियल t इक्वल टू इन्फिनिटी रखने के बाद 0 नहीं होगा. सो दैट्स व्हाई आई एम पुटिंग दिस रिस्ट्रिक्शन. तो ये कंडीशन रखने के बाद ये गारंटी हो जाती है कि ये कभी भी पॉजिटिव नहीं होगा. और जब इन्फिनिटी हम यहाँ पुटअप करेंगे तो ये बनेगा e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी, एंड यू नो दैट e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी 0. वाओ, द न्यूमरेटर itself becomes 0 when you put t equal to infinity, when this restriction imposed, and therefore your upper limit give you 0. So now only find this is minus lower limit. Now you put t equal to 0 here. E to the power 0 is 1 upon s square plus a square. Okay. Put t equal to 0 here. Sine of 0 is again 0, so it is 0 minus this is a, and when you put t equal to 0, and we know that cos of 0 is 1, so it is into 1. Okay, so its meaning is that Laplace transform of sine of 80 is this minus become plus. In the numerator I am getting a divided by s square plus a square, and this answer is true when the real part of variable s greater than 0. I am putting real part because I am considering s is a complex number. अगर s रियल नंबर है तो आपको रियल पार्ट लिखने की जरूरत नहीं है. s is greater than 0. So this is the answer. This is the derivation. May in your exam derive formula may be asked, or otherwise you are using this formula for the solving purpose, right? There will be so many examples involving sine 80 or sine 2t, sine 3t, whose Laplace transform you have to find, and therefore you keep remember this, the Laplace transform of sine, right? How to remember? I will explain. Okay. Now suppose this is the Laplace transform, this is the sine. You keep remember this is the original basic trigonometric function whose power is 1. साइन का Laplace transform निकाल रहे हैं तो बच्चे क्या करते हैं, साइन का ऐसा है तो साइन स्क्वायर का वो जो आंसर आएगा उसका स्क्वायर करते हैं. I am not telling about sine square, sine cube, root sine, nothing. I am just telling about only sine. तो साइन जिसका पावर 1 है, अब इसके अंदर वेरिएबल होगा, वेरिएबल t है और t का कुछ कोएफिशिएंट रहेगा, whatever it may be. ये नंबर t को मल्टीप्लाई होगा, कुछ नहीं है तो 1 ले सकते हो आप, राइट? तो यहां पर हम उस नंबर को a डिनोट करेंगे. a इज अ कांस्टेंट मल्टीप्लाइंग टू t. तो इसका आंसर आएगा, यू ड्रॉ द लाइन फर्स्ट, सी which कांस्टेंट इज मल्टीप्लाइंग टू t इनसाइड द साइन. अब यहां पर a है, a की जो भी वैल्यू होगी पर्टिकुलर वो आपको यहां लिखना है.
तो यहां फिलहाल तो a है, तो आई एम पुटिंग a in the numerator. Now this is a trigonometric function, therefore you put like this, bracket square plus bracket square. In the first bracket you put the new variable, that is s or p, whatever. So I am putting s directly here, and the number which you have already written in the numerator you put here. So you are getting the answer of Laplace transform of sin 80. ठीक है, मैं अभी आपको cos का भी आंसर बता देता हूं, फिर हम उसको डिराइव करेंगे. ठीक है, Laplace transform of cos, और अंदर एक नंबर होगा जो t को मल्टीप्लाई कर रहा है लाइक दिस, तो इसका आंसर आएगा. अगेन ड्रॉ द लाइन, अगेन इन द डिनोमिनेटर ब्रैकेट स्क्वायर प्लस ब्रैकेट स्क्वायर. In first bracket you put s or p, whatever variable, but standardly I am using s here, that constant a, but in the numerator you are not putting constant. Now you are putting the new variable, that is s. So let us see what is the difference between these two formulae. In the both formulae, denominator is same. Only the difference is in the numerator. In sine, the numerator is a constant, that is a, and in the cos, numerator is not a constant, it is a parameter, and that is s. So, how to remember this? See, the spelling of cos is started from letter c. So C for cos and C for constant. तो सर पे या न्यूमरेटर में C है, तो C का जो कांस्टेंट आता है वो नहीं होना चाहिए. C for cos, C for constant, कांस्टेंट नहीं चाहिए. तो ऊपर कांस्टेंट नहीं आएगा तो क्या आएगा, फिर कांस्टेंट नहीं आएगा तो पैरामीटर आएगा, दैट इज s, राइट. और साइन का स्पेलिंग शुरू होता है s से, तो यहां s से शुरू हो रहा है तो ऊपर s नहीं आएगा, तो s नहीं आएगा तो दूसरा ऑप्शन बचता है, दैट इज कांस्टेंट, दैट इज e. सो यू कैन कीप रिमेंबर लाइक दिस. नाउ द क्वेश्चन विल बी आस्क्ड लाइक दिस, प्रूव दैट द Laplace transform of cos 80 is like this. How we can prove? So I'm proving that Laplace transform of cos of 80. Okay, what is the definition of Laplace transform? It is integration from 0 to infinity e to the power minus st into that function, and that function is cos of 80 dt. Oh my god, again it is a product of exponential function and one of the trigonometric function, that is cos. In the last example already we have seen short method to get the integration of such a integration, and the same method I can apply here for cos also. So that means whatever the method I have explained earlier, that is suitable for both sine as well as cos. Only sine and cos, not tan, not sec, not cosec, right? So what I have stated, the short methods, you write exponential function as it is, okay, divided by squaring of first constant, and here your first constant is minus s, okay, plus squaring of second constant, and here second constant is this one, a, give the parenthesis. Now you write the first constant, that is minus s, this function as it is, cos 80, leave the some space, यहाँ थोड़ी जगह छोड़ना है प्लस या माइनस लिखने के लिए, वो हम बाद में लिखते हैं. नाउ राइट द सेकंड कांस्टेंट, दैट इज a. नाउ दिस इज योर ओरिजिनल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, दैट इज cos. मन ही मन में cos का इंटीग्रेशन निकालिए. cos का इंटीग्रेशन आता है sin. sin means plus sign, therefore I am writing plus here, sin here.
ये जो चीज जो मुझे याद रखना पड़ रही थी वो मैंने इस तरीके से याद रखा है ताकि मेरी कोई गलती ना हो। अब साइन के अंदर आपको वही लिखना है जो ओरिजिनल फंक्शन के अंदर था, दैट इज 80 एंड लिमिट्स आर फ्रॉम 0 टू infinity. Simplify this, e to the power minus st divided by minus s का स्क्वायर आता है स्क्वायर सॉरी प्लस a स्क्वायर, दिस इज माइनस s into cos of 80 plus a into sine of 80. All right, and the limits are from 0 to infinity. Again the same condition or same restriction we have to impose on s, and what is that? For real part of s greater than 0, what will happen when I put the upper limit, or I am calculating the limit whatever the upper side, that is t tends to infinity and s is a positive, minus sign is there, therefore it is 0. So your upper limit value is 0. Now this is minus. Now you put lower limit, that is e to the power 0 is 1 divided by s square plus a square. Okay, ये 0 यहाँ पुट करेंगे, a इंटू 0 0 हो जाएगा, cos 0 1 होता है तो 1 इंटू माइनस एस, ये माइनस एस हो जाएगा, प्लस जब ये 0 आप यहां पुटअप करेंगे, a इंटू 0 0, साइन ऑफ 0 इज 0. ओके, नाउ दिस माइनस एंड दिस माइनस will become positive and your answer must be s upon s square plus a square, and therefore Laplace transform of cos 80 is equal to s upon s square plus a square, and this is true for real part of s greater than 0. So अभी हमने डिराइव किया cos 80 का Laplace ट्रांसफॉर्म, डेरिवेशन भी सीखा, फॉर्मूला भी सीखा और cos का भी सीखा, राइट. नाउ लेट अस हैव वन मोर फंक्शन, so that is how to get the Laplace transform of e raised to 80. ठीक है, e raised to 80. So start with the definition of Laplace transform. Now the function is e to the power exponential function. What is the definition of Laplace transform? That is integration from 0 to infinity. The kernel of Laplace transform is e to the power minus st multiplied by this function e raised to 80 and dt. Oh, I'm looking the product of two functions, but fortunately these two functions are not of different category. Both are of the same category. The first, that is a kernel, that is also expressed in terms of exponential function, and the function whose Laplace transform I am finding, that is also itself exponential function. Therefore I can use the rule of indices because base of both the function is same. So do you know what is the rule of indices? You keep base commonly and there is a multiplication, है ना, तो indices का होता है addition. So I am writing minus st plus 80 and this is integration with respect to t. Okay. Now when I look at this bracket, I can see this t and this t, the same t is multiplying to minuses as well as a. Therefore what I should do, I can take this t as a common. So I can write this as a how to write this is minus s plus a into t. Okay, ये t को मैंने कॉमन निकाला, dt. Right. Now the very obvious thing to get the integration of this expression,
बिकॉज दिस एक्सप्रेशन इज कंटेनिंग एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इंटीग्रेशन कुछ इस तरीके से हम लिखते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इंटीग्रेशन, जो भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन आपको दिया गया है वो एज इट इज लिखिए, डिवाइडेड बाय द डेरिवेटिव ऑफ द पावर ऑफ दैट एक्सपोनेंशियल फंक्शन with respect to time t, because you are taking integration with respect to t. So this is the power, and what is the derivative? Minus s is a constant, plus a is a constant, so whole bracket is a constant with respect to t, and only I have to find the derivative of this t, and we know that derivative of t with respect to t is 1. So when you take the derivative of this power, you will get only minus s plus a, this bracket, into the derivative of t is 1, and the limits are from 0 to infinity. Okay, all right. Now the question is, what will happen when I put upper limit instead of t? When you put t equal to infinity, everything is depend on this bracket. When this bracket is negative, then only you will get the 0. Otherwise, it will not converge, or it will not finite. So I am putting the condition that for real part of minus s plus a is less than 0. ये जब नेगेटिव रहेगा तभी ये इन्फिनिटी यहाँ आकर ये माइनस इन्फिनिटी बनेगा, एंड व्हेन e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी हमको मिलेगा तो उसका आंसर तो 0 आएगा। हम चाहते हैं कि वो 0 आए, है ना। इसी को थोड़ा रीराइट करते हैं। यहाँ पर a देखिए, a इज अ रियल कांस्टेंट, तो इसलिए उसका रियल पार्ट वगैरह कुछ होता नहीं है, तो रियल पार्ट की कंडीशन सिर्फ यहाँ पर आएगी। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि इट कैन बी इक्विवेलेंटली रिटन एज real part of minus s plus a less than 0. This is again equivalently written as minus of real part of s is less than minus a. And when you cancel out both the minus sign, then this inequality will be reversed. And therefore यहाँ पर ये हो जाएगा रियल पार्ट ऑफ s, ये a माइनस साइन दोनों के आपने हटा दिए तो इसका मुंह इधर हो जाता है, इट इज ग्रेटर देन लाइक दिस. So this is the required condition for the existence of this integration. So for this condition, it is guaranteed to have this coefficient must be negative. And therefore, when you put t equal to infinity, your upper limit value should be 0 minus, when you put 0 here, it will become 1 upon the denominator is minus s plus a. ये माइनस नीचे मल्टीप्लाई होगा, ये प्लस होगा और ये माइनस होगा. That's why your answer should be 1 upon s minus a. So what is the Laplace transform of e to the power at? It is 1 upon s minus a. Already we have proved. Okay. Now see the magic. This left hand side I can write like this into 1. 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद आपको पता है कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो हमने लिखा 1. अब देखिए कि जब भी किसी फंक्शन, अब ये 1 है, यू नो द लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 इज 1 बाय s. यू ऑलरेडी नो दैट इसका लैपलास ट्रांसफॉर्म 1 बाय s आता है. तो यहां हमको ये नई चीज सीखने को मिलती है, एंड व्हाट इज दैट, कि जब किसी फंक्शन को कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन मल्टीप्लाई होता है,
जैसे यहाँ 1 को e टू द पावर 80 मल्टीप्लाई हो रहा है, दिख रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आप क्या कीजिए, वो जो फंक्शन है जिसको वो एक्सपोनेंशियल मल्टीप्लाई हो रहा है उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म मन ही मन में निकाल लीजिए। मतलब यहां मेरे मन में, दिमाग में, आई एम थिंकिंग अबाउट व्हाट इज द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 एंड दैट इज 1/s, and in that answer you just replace that variable s by s minus this number। मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन में जो t का कोएफिशिएंट रहेगा उस नंबर को s से माइनस करके इसका जो भी आंसर आएगा उसके अंदर s की जगह रिप्लेस करना है। तो 1 का आंसर आ गया था ये, और आपको अब क्योंकि ये इसको मल्टीप्लाई हो रहा है 1 को, तो रूल ऐसा बनेगा कि 1 लिखिए और नीचे जो s लिखने वाले थे आप उसके जगह आप लिखिए s माइनस, माइनस इज कंपल्सरी, और ये जो नंबर दिख रहा है एक्सपोनेंशियल फंक्शन में कांस्टेंट वो लिखना होगा, दैट इज e, सेम आंसर। तो इसलिए देखिए दिस इज कॉल्ड एज अ which rule I just forget, it is not a change, yes it is a change of scale, yes it is a change of scale, I think, not change of scale, it is a shifting property, shifting, okay, so it is what, shifting property, shifting property. So in general what is shifting property? Laplace transform of e raised to at into f of t, suppose like this, is equal to, और ये जो f of t है उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑलरेडी अगर आपको पता है, यू नो दैट इट इज f of s, तो इसका देखिए 1 का आंसर 1/s आया था, तो उसी आंसर में आपने s को सिर्फ ऐसे रिप्लेस किया, तो अब ये f of t है जो मल्टीप्लाई हो रहा है इसको, उसका आंसर अगर ये है तो यही आंसर आएगा, बस s के जगह रिप्लेस करना है आपको, तो ये f और s के जगह रिप्लेस करना है s माइनस ये नंबर यहां जो भी रहेगा दैट इज e, समझ रहे हो आप? तो ये है शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। एक और एक एग्जांपल लेते हैं, इंटीग्रेशन e टू द पावर -3t एंड यहां लिखते हैं sin 2t लाइक दिस। तो ये इसको सॉल्व कैसे करोगे? जैसे ही आपको पता चला कि कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन किसी को मल्टीप्लाई कर रहा है तो आपका काम आसान हो जाता है। नाउ यू डोंट अप्रोच टू द बेसिक इंटीग्रेशन ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म, वो बहुत डिफिकल्ट जाएगा, है ना। मतलब बाय डेफिनेशन अगर आप इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालोगे तो बहुत डिफिकल्ट जाएगा, और फिर क्या मतलब है इतना सीखने का। सो दैट्स व्हाई वी आर लर्निंग मैथमेटिकल मेथड्स, एंड I think mathematical methods must be simpler. So यहां पर आपको sin of 2t का लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है। तो आप जानते हो साइन का लैप्लास, साइन है मतलब ऊपर कांस्टेंट आएगा, तो ये कांस्टेंट 2 है तो यहाँ 2 लिखेंगे हम। यहाँ हम s का स्क्वायर लिखते हैं, लेकिन फिलहाल मैं s नहीं लिख रहा हूं, और प्लस उसी कांस्टेंट का स्क्वायर लिखते हैं। बेसिकली साइन के यहाँ s आना चाहिए, लेकिन ये सिर्फ साइन नहीं है, इसको ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहां हम लिखेंगे s माइनस ये नंबर। अब ये नंबर खुद माइनस है, तो ये माइनस यहां का और ये इसका खुद माइनस, तो माइनस माइनस प्लस 3। सो आंसर ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस इज 2/s प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस स्क्वायर ऑफ 2 इज 4, तो आप उसको 4 लिख सकते हो, ठीक है। So this rule is called as a shifting property of the Laplace transform, and this is valid only when any Laplace transformable function will be multiplied by some exponential function, ठीक है। तो ये अगर सच है तो ये सवाल भी आ सकता है कि प्रूव दैट Laplace transform of ये स्टेटमेंट अगर किसी ने हमको प्रूव करने बोला, शो दैट दिस, प्रैक्टिकली पर्पस मैंने समझा दिया कि कैसे इसको मैनेज करना है, लेकिन थ्योरेटिकल पार्ट में थ्योरम ही पूछा कि फाइंड द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e raised to at f of t is equal to, then what we should do? So let us see the theorem.
Theorem is like this: if Laplace transform of this ft is equal to capital Fs, it is given, then show that, or prove that, then show that Laplace transform of e to the power at into this ft is equal to, क्या आएगा बताइए आंसर? ft का आंसर जो आया था वही लिखेंगे, लेकिन s को रिप्लेस करेंगे s माइनस a से. ये प्रूव करके बताना है. सो नाउ वी आर प्रूविंग. इट्स वेरी सिंपल एंड वेरी लॉजिकल. given what given to you? Capital F of s, this is equivalent to Laplace transform of f of t, and we know that the basic definition of Laplace transform is integration 0 to infinity e to the power minus st f of t dt. इसको हमने कितनी बार लिखा है देखिए, लेकिन फिर भी observations are very important in mathematics. What you observed in the right hand side, there is integration, lower limit is 0, upper limit is infinity. Okay, fine. Then you are observing the kernel of the Laplace transform, that is e raised to minus st into ft. Okay, see, this is a t variable, this is also t variable, so both are equal. T matching, right? Now you must have minus sign here. So if you catch this minus sign, so minus variable t, that t is also present in the function, then what is remaining inside that minus and that t? सैंडविच बन गया है s का. माइनस इधर है, t इधर है, दोनों के बीच में जो आया वो है ये. दिस वेरिएबल इज s, and this variable s is present here. See, this is present here. So this is a function, some function denoted by small f. After integration we will get another function that is denoted by capital F. That is not an issue. Issue is about only the variable, right? तो क्या क्या सीखा आपने कि यहाँ जो फंक्शन होता है उसका वेरिएबल यहाँ होना चाहिए, माइनस होना चाहिए, और माइनस और उस वेरिएबल के बीच में जो भी रहेगा आज s है, वो आपके आंसर का वेरिएबल रहेगा, राइट? इसको ध्यान में रखिए. ओके, तो ये हो गया आपका ओरिजिनल डेफिनेशन. नाउ हमको जो प्रूव करना है, नाउ आई एम कंसिडरिंग दिस वन. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. Laplace transform of e to the power at f of t, and what is the definition? Definition is integration 0 to infinity kernel of the Laplace transform is this one, and your original function is e to the power at into f of t dt. राइट, यहाँ जो होता है वो मल्टीप्लाई करके लिखा हमने. उसके बाद मैंने देखा कि ये भी एक्सपोनेंशियल है, ये भी एक्सपोनेंशियल है, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी हो रहा है, तो व्हाई नॉट we use the rule of indices. Okay, I can use that. 0 to infinity e to the power minus st, this is the first exponent, plus second exponent is at into ft dt. Fine, this is also fine. But according to original definition of Laplace transform, we need minus sign, which is a multiplier to the quantity. Here minus sign is there, but it is a multiplier to the first term only, not to the second term. That's why, to put in the standard form, what I am doing, I can take minus sign as a common from this exponent. तो माइनस साइन जब मैं कॉमन लेता हूं, तो ये जो माइनस एस टी था वो एस टी बनेगा, और ये जो पॉजिटिव था, क्योंकि मैंने माइनस साइन कॉमन लिया है, ये माइनस एटी बनेगा. ओके, ऑलराइट. एक एक चीज मैं उस तरीके से लिख रहा हूं जिस तरीके से ओरिजिनल डेफिनेशन है. तो माइनस साइन पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई हो रहा है. दैट्स फाइन, वेरी फाइन. लेकिन सर
आपने बताया था कि एक्सपोनेंशियल जो होता है उसके ऊपर माइनस भी होना चाहिए, और जो वेरिएबल है ये फंक्शन का जो वेरिएबल है वो सेपरेटली राइट में होना चाहिए। तो माइनस और वो वेरिएबल टी के बीच में जो होता है वो उसके आंसर में आएगा। इज इट राइट? ओके, तो यहां पर आपको टी तो कॉमन ले सकते हो आप। ओके, सो इट इज 0 to infinity e to the power माइनस, यहां आपने टी लिया कॉमन, और यहां बचा s माइनस ए, एंड दिस इज एफ टी टी टी। देखिए अब माइनस इधर दिख रहा है लेफ्ट में, और राइट में टी है जो वेरिएबल जो यहां मैंने एक्सप्लेन किया था। अब बीच में सैंडविच किसका बना? माइनस और टी के बीच में जो आ रहा है वो आपका वेरिएबल रहेगा आंसर का। तो देखिए सिंपल सी बात है कि यहां स्मॉल एफ का लैप्लास ट्रांसफॉर्म कैपिटल एफ आ रहा था, तो यहां भी स्मॉल एफ का लैप्लास ट्रांसफॉर्म कैपिटल एफ आएगा, लेकिन वेरिएबल यहां जो होगा वो आएगा। देखिए यहां एस था तो इसलिए इधर हमने एस लिखा था, लेकिन यहां एस नहीं है, यहां है एस माइनस ए, तो यहां आएगा एस माइनस ए। This is your required answer. You have started with this side, and using some rule of indices and some logical things involved in the definition of Laplace transform, you will get that what you want. That is capital F S minus A. So this is the very simple proof I have proved logically, right? You keep remember and try to write like this. Okay, now I will solve some examples. Okay, so tell me what is the Laplace transform of what I can write is e to the power 5t into t raised to 4. Okay, look at the example. This is the product of two different functions, and they are asking me to find the Laplace transform of such a product. What I should do? Shall I use that original definition 0 to infinity e to the power minus st? You can use, but that will become very terrific, because when integration involved, you have to solve that integration, and that is what I don't want that. Okay, so here this function is a power function. I can find its Laplace transform, and this is the exponential function multiplying to that power function. So just I click that I can use the shifting property here, है ना? shifting property यूज करते हैं, तो इसका आंसर हम निकालते हैं. First of all, we will find Laplace transform. We know that Laplace transform of t raised to 4 is equal to, it is a gamma function of 4 plus 1 divided by s raised to 4 plus 1. According to property of gamma function, ये 4 plus 1 का gamma function मतलब इस 4 का फैक्टोरियल होता है, तो ये 4 फैक्टोरियल, because it is integer we can find its factorial divided by s raised to 5. This is the Laplace transform of only t raised to 4, but they have asked me to find the Laplace transform of this function into t raised to 4. So use the shifting property here, and that is, you write this answer as it is, 4 factorial divided by s raised to 5, but you don't write s as it is here because I am using shifting property. So instead of s I am writing s minus this number is 5, and therefore the answer of this question is 4 factorial divided by s minus 5 raised to 5. It's okay. Now I'm giving you some examples for your practice. Find the Laplace transform of e raised to minus 7t into t raised to 2.
Find the Laplace transform of e to the power t only into cos of 7t. Now find the Laplace transform of e to the power minus t into sine of 3t. All right. Okay. Now these are the three examples for your practice, and I am recommending that use the shifting property which you have learned in this lecture. Right. Take care. Bye bye.